आज ओमकार विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल नरोली में ज्ञान मेले का आयोजन हुआ। स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अमित सिंह चौहान जी ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने और प्रसारित करने की दृष्टि से इस ज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जहां बच्चों के विज्ञान, गणित और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है। छात्रों और अभिभावकों की अधिकतम भागीदारी एवं आज के ज्ञान मेले में भाग लेने के लिए सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है और आगे भी इस तरह के ज्ञान मेला होता ही रहे और हर ओमकारियन अंतर्निहित प्रतिभा को व्यक्त करने का अवसर मिलता ही रहे। यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। Sir, welcome to Omkar Vidya Mandir School Gyan Mela. My name is Kinjal bin Suresh Bhai Prajapati. I am from 6th standard. My topic is solar panel. Solar energy is energy that created by the sun's rays. Solar energy is usually captured by the solar panel, which can be added to the houses and other buildings. Thank you. Have a nice day. A pleasant welcome to sir in our Gyan Mela in our school Omkar Vidya Mandir Naroli. I will be explaining what is the global warming, its effects, the reasons, and most important is the how to can be control the global warming. Global warming is the sun trapped by the sun heats is called the global warming, and then the reasons of the global warming, generating power and generating electricity, and is called the reasons of the global warming. And how to can be control the global warming, when drive less, no polluted water, and save the water, and no cut the trees and save the trees, then we can control the global warming. Have you liked it? Thank you. Hey everyone, my name is Satyapraj Chauhan and my name is Anuradha Tiwari. A warm welcome to the most happening event from Omkar Vidya Mandir School, the Gyan Mela. This exhibition will kindle in us the spark of knowledge as we can see and experience charts, models and also working models prepared exclusively by the student of Omkar Vidya Mandir. We have made the project of ecosystem that contains animals, plants and also waterfall. These all form a natural ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains and even a small pond. Why are ecosystems important for us? Ecosystems are most important for us to maintain the balance of the environment. It is our responsibility to maintain the balance of environment, to live a harmonious and peaceful life. A perfect balance is necessary between human and natural environment, and we human live in a harmonious way. Thank you and enjoy the Mela. Good morning, my name is Kalpana Saket. I am from 8th standard. Today in our Omkar Vidya Mandir, there is a science exhibition. And many students have prepared different types of models. Our teachers are encouraging us more and more for learning, and I also have prepared a project. This is a 3D hologram projection. A 3D hologram is defined as a 3D projection that exists freely in space and is visible to everyone without the need of 3D glasses. Most people are only familiar with holograms from Hollywood movies. Science fiction films are full of futuristic reality. However, holograms are no longer fiction but already a tangible reality. Nowadays, holograms can be seen many places, and you can make it at your home with the help of transparent plastic or glasses. One of the most exciting applications of holograms is the improvement of educational experiment. In order to engage students more fully, interactive digital lessons will be used in schools.
थैंक यू। जो स्कूल पे क्या प्रोग्राम रखा गया और जो एग्जीबिशन है उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? आज हमारे स्कूल के अंदर ओमकार विद्या मंदिर में ज्ञान मेला करके एक एग्जीबिशन रखा गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ नॉट ओनली साइंस रिलेटेड, यानी इसमें लैंग्वेज भी यूज़ किया, लैंग्वेज जैसे कि मीन्स हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उनके भी अलग अलग मॉडल्स वगैरह हम लोगों ने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जूनियर केजी से लेके 8th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे 175 प्लस जितने अलग अलग मॉडल्स हैं। और ये मॉडल्स के अंदर जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग्स वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड, और जो मीन्स एयर पॉल्यूशंस, अर्थ पॉल्यूशंस वगैरह भी जो हो रहा है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जो चीज़ जो है यहाँ पे मीन्स मॉडल के द्वारा जो पेरेंट्स और जितने भी जो भी ऑडियंस जो भी आए हैं उनको दिखाया गया है कि ताकि एक पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट होए। Good morning. We at Omkar Vidya Mandir Naroli have kept a Gyan Mela. In this Mela, we see the children have prepared lot of models, charts, working models, etc. And they are explaining that to everybody, whoever is coming and asking them, so that then they can showcase their talent through this Gyan Mela.